Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. So today we'll discuss the remaining part of jurisprudence. So we'll discuss the remaining part of jurisprudence and try to cover as much as we can. So what we have seen will resume from that part. So we was discussing about the different members of DTAB, members of PCI, etc., etc. So yesterday we have seen these members of DTAB, but again I would like to revise you. DTAB, Drug Technical Advisory Board. So Drug Technical Advisory Board, so it is a board was constituted to advise the government of India under the for the technical matters related to advise the government on a technical matters related to drugs. So this board was constituted. Some are the committees which are advisory committees, some are the analytical committees, some are the consecutive committee, etc., etc. So one of the advisory committee under the Pharmacy Act is a Drug Technical Advisory Board, DTAB. It has a total 18 members. So there are some elected members, there are some nominated members, there are some ex officio members. So remember, lot of time question has been already asked in the various exam. बहुत बार उसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ DTAB कितने मेंबर्स है? टोटल 18 मेंबर्स है. टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन DTAB 18. So out of that, some are elected members, some are nominated members, some are the ex officio members. What are the elected members? One teacher is elected from the pharmacy background, that is elected by executive committee of PCI. तो executive committee जो है pharmacy council of India की, वो एक टीचर को इलेक्ट करता है among the teachers for the as a member of DTAB. ठीक है. Another again one teacher from medicine or therapeutics, that is being elected by Medical Council of India. Then one pharmacologist is elected from the ICMR. One person is also elected from CMA and one person from Indian Pharmaceutical Association, IPA. So total 5 members which are elected members. Now what are the nominated members? Nominated members कितने हैं? जो डायरेक्टली नॉमिनेट किए जाते हैं, उनका कोई इलेक्शन नहीं होता है. तो 2 persons they are nominated by the state government from the in charge drug control officer of state. ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर ऑफ स्टेट जो है उसमें के 2 स्टेट क्या करेगा, उसको नॉमिनेट करेगा. 1 person फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मा इंडस्ट्री. तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसमें का एक नॉमिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करता है. 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 अगेन गवर्नमेंट एनालिस्ट नॉमिनेटेड बाय
central government. So again 5 elected, 5 nominated. Now ex officio members, ex officio मतलब बड़े लोग, जहाँ पे डायरेक्टर लेवल के, प्रेसिडेंट लेवल के जो लोग हैं वो रहते हैं. तो पहला है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, एंड दैट इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, DGHS. DGHS is also chairman of DTAB. तो क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी. From the amongst the ex officio member, who is the president of DTAB? Who is the chairman of DTAB? The chairman of DTAB is nothing but the Director General of Health Services. Second ex officio member, Drug Controller of India. Third is the Director CDL Kolkata. Fourth one is the Director CDL Kasauli. Fifth one is the Director IVRI, Indian Veterinary Research Institute, Iddatnagar. Then sixth is the PCI President. Then seventh is the President MCI, Medical Council of India. And then Director of CDRL Lucknow, Central Drug Research Laboratory Lucknow. So यहाँ पे there are 5 elected, 5 nominated, and there are 8 ex officio members. So total there are 18 numbers. Total 18 members under the DTAB. DTAB के अंदर कितने मेंबर है? टोटल 18 मेंबर्स, याद रखना है. नाउ मेंबर्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. तो इन द PCI देयर आर 19 मेंबर्स. PCI के अंदर 19 मेंबर होते हैं, है ना. तो PCI प्रेसिडेंट ने बोला है कि मैं अकेला थोड़ी हूँ यहाँ पे स्टाइपेंड लेने के लिए, है ना. हमारे और भी मेंबर होते हैं, और हम में से क्या है, पॉलिटिक्स चलता है. ऑन कैमरा बोला है ना. वो कितने मेंबर्स है देख लो यहाँ पे. तो there are some elected members, some nominated members, and some ex officio members. So 6 members are elected for the PCI. 6 members are elected amongst the, है ना, amongst which at least one should be teacher. At least one should be teacher from either pharmacy or pharmaceutical chemistry or pharmacology or pharmacognosy. Now that is elected by University Grant Commission amongst the teachers of Indian universities, affiliated colleges, which are imparting a diploma or degree in the pharmacy. And 4 members are elected from the registered pharmacist. Okay. Then again 1 member elected among the member of Medical Council of India, है ना. तो 6 मेंबर कौन इलेक्ट करता है? फार्मासिस्ट होंगे. 6 मेंबर में should be, these 6 elected member will be pharmacist. Out of that 1 should be teacher, and remaining 5 should be pharmacist. Okay. Now 1 member is elected from Medical Council of India. 1 member is also elected from State Pharmacy Council of India. जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल होता है हर एक स्टेट का, उसमें का 1 मेंबर. तो टोटल इलेक्टेड मेंबर कितने हुए? टोटल इलेक्टेड आर 8 मेंबर्स. Now nominated member of PCI. 6 members are nominated by Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, out of which 4 should have either degree or diploma in the pharmacy, or they should be engaged in the pharmacy practice or pharmaceutical industry. So out of 6, 4 must be having degree or diploma, or they must be practicing in the industry or in pharmacy, right? So 6 nominated members. Again one more nomination is there. 1 representative of each UGC and AICT. हर एक का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है. अभी AICT तो अभी बाहर चल रहा है, अभी UGC का है. Now 1 member of each state government who should be registered pharmacist nominated by state government or union territory. तो ये 6 हो गए, और ये 2 8, है ना. अगर दोनों AICT UGC के दोनों एक आता है तो 9 हो जाएंगे. तो टोटल मेंबर्स इलेक्टेड 8. टोटल मेंबर्स nominated are either 8 or 9. 8 or 9. Then ex officio members. So in that, एक तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिज रिप्रेजेंटेटिव और हिज नॉमिनी. ये क्या हुआ है? डायरेक्टर, है ना, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी, ये हुआ है 2. एंड डायरेक्टर CDL कोलकाता, सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी कोलकाता.
तो टोटल एक्स ऑफिशियो मेंबर कितने हुए? 3। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में 8 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, 8 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, एंड 3 कौन से होते हैं? एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो लाइकवाइज दैट विल सी मेंबर्स ऑफ जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, है ना। तो अगर 1 2 3 या 3 स्टेट है या फिर 2 3 स्टेट है, तो इफ दे आर रेडी अमंग देमसेल्फ, है ना, अगर वो स्टेट छोटा है तो वो एक पूरा अकेला का फार्मेसी काउंसिल, जो स्टेट काउंसिल है, वो बना नहीं सकता। तो 2 3 स्टेट मिलके एक जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाते हैं। तो स्टेट्स इफ दे आर ready among themselves mutually, if they are ready for that, they will form a joint state pharmacy council. Joint state pharmacy council. Now members of joint state pharmacy council, है ना, and state pharmacy council. अगर एक बड़ा स्टेट है तो वो खुद का स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाएगा, and if small states are there, they may form a joint state pharmacy council. Now first we'll see the state pharmacy council. What are the elected members of state pharmacy council? So state pharmacy council में again, so 6 members are elected by the state government from the registered pharmacist of state. Again, 1 registered medical practitioner elected from the medical council of state. तो 6 member जो registered pharmacist है आपके state के, उसमें से 6 elect होके आएंगे। इलेक्शन होता है ना MPSC, महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल, MSPC, उसका भी इलेक्शन होता है, मुझे भी आता है पहले के बाद, ठीक है। देन 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अमंग्स द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट विल बी इलेक्टेड। तो है ना, नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन है? 5 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय स्टेट, आउट ऑफ विच 3 शुड हैव डिग्री और डिप्लोमा इन द फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। So 5 members are nominated, 7 members are elected, ex officio member. So there are 3 ex officio members. First is the chief administrative officer in charge of medical and health services of state or its nominee. So chief medical officer जो होता है, chief medical officer in charge of medical and health services state or his nominee. Second nominated, second of ex officio officer in charge, officer in charge of drug and cosmetic act of state or their nominee, officer in charge for DNC act for the state or his nominee. Third क्या होता है इसका? ex officio 1 government analyst nominated by state government, 1 government analyst nominated by state government, which is the ex officio member. So there are 7 elected members, 5 nominated members, and 3 ex officio members in the state pharmacy council. इनके फंक्शन क्या होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल के, है ना? स्टेट फार्मेसी काउंसिल के फंक्शन होते हैं टू मेंटेन द स्टेट फार्मासिस्ट रजिस्टर, है ना, टू रिकॉग्नाइज द क्वालिफिकेशन एंड एंटर द नेम ऑफ दैट फार्मासिस्ट, सभी क्राइटेरिया अगर फुलफिल है तो उसका नेम। Now we'll see later on Pharmacy Council of India, functions of PCI, functions of State Council, right? Now first, Joint State Pharmacy Council के members. So in the Joint State Pharmacy Council means if 2-3 states are in a will or in a ready to form a Joint State Council, वो एक काउंसिल नहीं बना सकते, तो वो 2-4 स्टेट मिलके एक काउंसिल बनाते हैं। तो अगेन इलेक्टेड मेंबर 3 to 5 members elected from the registered pharmacist amongst the participating state. अगर 3 स्टेट है तो उसमें 3 से लेकर 5 मेंबर तक इलेक्ट हो सकते हैं। 1 registered medical practitioner elected by medical council of each participating state. अगर 3 पार्टिसिपेंट स्टेट है तो तीनों स्टेट का एक मेडिकल काउंसिल का एक इलेक्टेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने हैं? 2 to 4 members are nominated from the each participating state, which of which more than 50% will be from pharmacy background. तो 2-4 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं फ्रॉम द एवरी पार्टिसिपेटिंग स्टेट, तो उसमें के आधे कम से कम फार्मेसी बैकग्राउंड के होने चाहिए। नाउ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, तो यहाँ पे पहला है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इंचार्ज ऑफ again medical and health services of each
participating state or his nominee. Again, officer in charge of Drug and Cosmetic Act of each participating state or his nominee. And third one है one government analyst nominated by each participating state. So near about same ही है State Pharmacy Council and Joint State Pharmacy Council के members. Now important points from Medical Termination of Pregnancy Act है ना. जो Medical Termination of Pregnancy Act है उसके अंदर what are the conditions in which a registered medical practitioner can terminate the pregnancies. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. So that's why conditions for medical termination of pregnancy. Conditions for medical termination of pregnancy. So what are the conditions? So medical pregnancy can be terminated only by registered medical practitioner. So termination of pregnancy can be done by registered medical practitioner only, who is having either MBBS MD degree in gynecology and obstetrics. तो गायनेक एंड ऑब्स्टेटिक में MBBS MD लेवल का डॉक्टर ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकता है. नाउ उसके लिए भी कंडीशंस है. प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर under the condition only the first if the length of pregnancy does not exceeds 12 week. If the length of pregnancy does not exceeds 12 week, 12 हफ्ते का प्रेगनेंसी नहीं है, उससे कम है. And if there is a risk to the mother or her, if a physician is in an opinion that there is a risk to the mother or her mental or physical health, है ना. If there is a risk to the mother, that pregnancy causes the risk to mother, or because of that pregnancy a mother may have his effect on a mental or physical health of the mother, or child to be born with a seriously handicapped or physical or mental abnormality. अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से कम है और डॉक्टर को ऐसा लगता है, आपको लगने से कोई फायदा नहीं, वो डॉक्टर को लगना चाहिए कि डॉक्टर को अगर ऐसा लगता है कि अगर ये प्रेगनेंसी वो माँ के लिए हानिकारक है, या फिर वो बच्चा है वो एबनॉर्मल पैदा होने वाला है, या फिर उसका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, तो इन दैट केस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी डन. तो डॉक्टर में टर्मिनेट द प्रेगनेंसी में अबाउट द प्रेगनेंसी. सेकंड कंडीशन है इफ द प्रेगनेंसी इज मोर देन 12 वीक्स बट लेस देन 20 वीक्स. 12 हफ्ते का प्रेगनेंसी है, उससे ज़्यादा है लेकिन 20 से कम है. If the length of pregnancy exceeds 12 weeks but not 20 weeks, and in this case you need an opinion of 2 registered medical practitioners, 2 gynecologists, that the pregnancy is due to the rape or failure of the contraceptive devices weared by either male or female, or because of the family planning, okay, and pregnancy involve the risk to the mother, है ना. एक तो है 12 वीक से कम प्रेगनेंसी होना चाहिए एंड उसमें भी मदर को रिस्क होना चाहिए, या फिर उसकी फिजिकल मेंटल हेल्थ को रिस्क होना चाहिए, या फिर जो बच्चा आने वाला है वो हैंडीकैप आ सकता है, ऐसा चांसेस है, या फिर मेंटल फिजिकल एबनॉर्मलिटी है उसमें, तभी जाके RMP विल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विल टर्मिनेट द प्रेगनेंसी. अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से ज़्यादा है लेकिन 20 वीक से कम है, तो इन दैट केस 2 registered medical practitioner, they should be in an opinion that the pregnancy is caused because of the rape or because of the failure of contraception, either weared by either woman or husband, or family planning because of the family, and pregnancy and all the risk to the mother. So in that case again registered medical practitioner can terminate the pregnancy. Registered medical practitioner can terminate the pregnancy of women who have attained the age of 18. 18 साल से कम अगर प्रेग्नेंट है तो उसको नहीं कर सकते ना, उसको कोर्ट से ऑर्डर लगेगा. 18 साल से नीचे है तो कोर्ट का ऑर्डर लगता है. RMP है ना, registered medical practitioner can terminate the pregnancy of women who have attempted 18 years of age with the consent, with her consent, उसके खुद के consent और गार्डियंस कंसेंट,
गाइडेंस कंसेंट, मतलब अगर है ना 18 साल की बच्ची है तो उसके खुद के कंसेंट से भी टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी, है ना। और 18 साल से कम है तो डॉक्टर हैज टू टेक कंसेंट ऑफ गार्डियन इन अ राइटिंग, है ना, विथ हर गार्डियन। सो registered medical practitioner can terminate the pregnancy if woman has attempted 18 years with her consent or her guardian's consent if the woman is less than 18. Now place for termination of pregnancy, यहाँ पे कहाँ पे प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हो आप? तो हॉस्पिटल एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट और एनी अदर प्लेस अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पज, जो भी हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने अप्रूव किए है जिसके लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए, है ना, गो हॉस्पिटल एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट और एनी अदर प्लेस अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पज। एक तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर सकते हो, सेकंड एनी अदर हॉस्पिटल विच इज बीइंग अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट फॉर दिस टर्मिनेशन शुड बी, है ना, वो जो हॉस्पिटल है इन दैट हॉस्पिटल शुड बी अवेलेबल, व्हाट शुड बी अवेलेबल, ऑपरेशन टेबल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, performing abdominal and gynecological surgery, there should be availability of anesthesia, there should be availability of resuscitation equipments and sterilization equipment, IV fluids, drugs for emergency use। यहाँ पे अगर दूसरे हॉस्पिटल में ये अवेलेबल है और वहाँ पे अप्रूव किया है तो वहाँ पे भी आप टर्मिनेट कर सकते हैं, राइट। नाउ inspection of that approved place, inspection of approved place or cancellation or suspension of certificate of approval for the medical termination, place of inspection of place or cancellation of or suspension of certificate of approval that can be done by chief medical officer of district, chief medical officer of district. He will inspect and send a report to a government with the detail of deficiency and defect if any found at the place. The government can cancel the government can order to cancel the certificate of approved or approved place or suspend the license of approved hospital, है ना। तो chief medical officer of district, he will inspect, he will send a report to a government. Hello, हाँ हो हो चालेल, हो हो मला माहिती आहे, हां तिथून तेच जे लक्ष्मण तिथं जातोय लेक्चर मध्ये, आता मी बोलतो मग, बोलतो मी बोलतो मी chief medical officer of district, he will inspect and send the report to the government, the place approved for medical termination of pregnancy. If any detailed deficiency or if any defect is found, the government can order to cancel the certificate of approved place or suspend the certificate. If inspection officer is not satisfied, due to the safety and hygienic condition of the place, so may call for any information or may seize any article, medicine, ampoule or administration register or any document maintained by or kept at that place। अगर इंस्पेक्शन ऑफिसर जो है उसको अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ कि यार यहाँ पे उतना सेफ्टी नहीं है, हाइजीनिक कंडीशन नहीं है, वो मे कॉल ना पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, एनी इंफॉर्मेशन मे सीज, वो जब्त कर सकता है, क्या मे सीज एनी आर्टिकल, मेडिसिन, एम्पूल्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्टर है वो उसको सीज कर सकता है, और एनी अदर डॉक्यूमेंट दैट इज मेंटेन और केप्ट एट अ प्लेस विच इज अ अप्रूव प्लेस फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नाउ मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, इसके ऊपर क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है। तो एडमिशन रजिस्टर
admission register should be maintained by head of the hospital. Admission register should be maintained by head of the hospital or owner of the approved place, or owner of the approved place in a prescribed format of the admission of the woman for termination of their pregnancy. तो admission register जो है, admission register should be maintained at a head of the hospital or owner's place, approved for the owner's place of the approved place in a prescribed format of the admission of women who are coming there to terminate their pregnancy, है ना. इसके ऊपर भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं. नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है और पेटेंट एक्ट है, उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो लेंगे. तो पहला है पेटेंट लॉ. तो IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स गिव राइट्स, एक्सक्लूसिव राइट्स टू द ऑथर और टू द इन्वेंटर टू प्रिवेंट द स्टीलिंग ऑफ हिज वर्क. आपने बड़ी मेहनत करके रिसर्च करके अगर कोई मेडिसिन बनाया, कोई सिंथेसिस किया, कोई ड्रग बनाया, उसका ट्रायल्स हो लिया और किसी ने उसको आपको करते हुए देख लिया और आपको वही प्रोसेस कॉपी करके खुद का भी चला सकता है, राइट. तो टू प्रिवेंट दैट देयर इज अ पेटेंट लॉ व्हिच विल गिव यू एक्सक्लूसिविटी फॉर 20 years. तो पेटेंट लॉ इट इज एप्लीकेबल फॉर इन्वेंशन एंड प्रोडक्शन इज गिवन फॉर द 20 years. तो 20 years में जो आपको प्रोटेक्शन है, आपको पेटेंट फाइल करना पड़ता है, वो 20 years में nobody can copy, nobody can produce your product. Copyright law is applicable for the literary, musical, artistic and sound recordings works. तो आपने अगर कुछ मूवी लिखा है, आपने अगर कुछ कविता लिखी है, आपने अगर कुछ है ना नोवेल लिखा है, तो उसका कॉपीराइट मिलता है आपको. तो to prevent the your work getting copied by another. So literary, musical, artistic, sound recordings, so that is covered under the Copyright Act. So it will give you exclusivity to the author, that is a 60 year, you know, and cinematic film है, cinematograph for again 60 year from the year of publication. Now trademark law है ना, आपका एक सिंबल है, आपका एक लोगो है, उसको अपन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, तो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसको कोई यूज नहीं कर सकता. द वर्ड्स, लेटर्स, न्यूमेरिकल डिवाइस और कलर्ड मार्क्स, थ्री डायमेंशनल साइंस, साउंड मार्क्स एंड स्मेल मार्क्स, टच मार्क्स. तो फॉर दैट यू कैन गेट अ ट्रेडमार्क. So you will get a protection for 10 years. It can be renewed by every 7 years. Protection for geographical indicators, है ना. तो होता है ना कि टेंडर कोकोनट वाटर कहाँ से आता है? केरला से आता है. दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन. प्रोटेक्शन फॉर जियोग्राफिकल इंडिकेटर लाइक गुड्स, है ना, जैसे रत्नागिरी हापुस आम ना, उसके नाम पे ऊपर कुछ भी भेज देते लोग. दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन. गुड्स और सर्विसेज belonging to specific origin, selective marks, certification marks. So protection is for indefinite period. Protection of undisclosed information. आपका एक रिसर्च कंपनी है और आप वहाँ पे रिसर्च कर रहे हो, लोगों को पैसा देके हायर किया आपने, और कोई एक बंदा है वो रिसर्च चुरा के दूसरे कंपनी को बोल रहा है ना. तो प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन, ट्रेड सीक्रेट related to production, sales method or any other information on which information of technology or business that is unknown to the public, है ना. आपका ही इंफॉर्मेशन आपके दुश्मन को बेच देगा. फॉर दैट according to IPR you have protection for undisclosed information, that is for indefinite period. Now again, protection for layout, design or integrated circuit. Protection of layout, design or integrated circuits.
layout design circuit for 10 years. Again, production is for 10 years. Protection of industrial design, a feature of shape, configuration, pattern और ornament. तो इंडस्ट्रियल डिजाइन जो होता है, आपका यूनिक आपने टेबल डिजाइन किया तो उसके लिए आपको दूसरी भी डिजाइन कर सकते हो देखिए, तो उसके लिए प्रोटेक्शन लाना पड़ेगा. तो प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन है ना, फीचर ऑफ शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न और ऑर्नामेंट. फॉर मिनिमम 15 ईयर पीरियड यू नीड एक्सक्लूसिविटी ऑफ प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी, आपने अगर कोई नया एक आम का प्रजाति बनाया, you have made a variety of plant varieties, extent varieties, seeds, etc. 18-year maximum, you will need a protection for that, for trees and vines. Extent varieties 15 years other than crops or other crops 6 years. ये प्रोटेक्शन है अंडर आईपीआर. इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ चुका है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया था, इन इंडिया पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर 20 years. Patent will give you protection for 20 years. After 20 years, your patent will expire. That will be called as a generic. It will be open for everybody. Now, different पेटेंटिंग ऑफिस इन इंडिया, इसके ऊपर क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है GPAT 2019 में. डिफरेंट पेटेंटिंग ऑफिस इन द इंडिया. नाउ फर्स्ट वन इज चेन्नई. So you can apply for a patent at Chennai if you are belonging to Andhra Pradesh. अगर आप आंध्र प्रदेश में रहते हो, कर्नाटका में रहते हो, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यूनियन टेरिटरीज लाइक लक्षद्वीप, Pondicherry, Lakshadweep. So if you are living in the south, and if you want to apply for a patent, you have to apply at a Chennai office. You have to apply at a Chennai office. Suppose you are living in a state of Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Goa, Chhattisgarh, Daman, Diu, Dadra Nagar Haveli. So these union territories, Daman, Diu, Dadra Nagar Haveli. So state of Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Goa, Chhattisgarh, Daman, Diu, Dadra Nagar Haveli. So if they want to apply for patent, they will apply at a Mumbai office. If you are in a Jammu Kashmir, Punjab, Delhi, Rajasthan, Chandigarh, Haryana, so state of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Rajasthan, Delhi and Chandigarh. तो यहाँ पे जो नॉर्थ में है वो अप्लाई करेंगे दिल्ली ऑफिस में. दे विल अप्लाई पेटेंट फॉर अ पेटेंट एट अ दिल्ली ऑफिस, न्यू दिल्ली ऑफिस. एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया दे विल अप्लाई फॉर द कोलकाता ऑफिस. और इसी के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है सर, है ना. तो महाराष्ट्र, है ना, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, पेटेंट विल बी अप्लाइड एट विच ऑफिस. और ऑप्शन में ये थे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, नागपुर हो गए, कंफ्यूज. तो जुरिसडिक्शन एंड पेटेंट ऑफिस. नाउ इन इंडिया लेजिस्लेशन ऑन ड्रग्स to control the malpractices in the dispensing and medication. तो फर्स्ट टाइम इंडिया में लेजिस्लेशन कब आया? टू कंट्रोल द malpractices of drug dispensing and medication. So legislation was passed on 11th August 1930. 11th August 1930. So first time the drug inquiry committee was constituted to control the malpractices in the dispensing and medication. So drug inquiry committee was formed under the chairmanship of R.N. Chopra. R.N. Chopra, also known as the Chopra committee. Also known as the Chopra committee. Question इसके ऊपर आ चुका है. Now first time Dr. C.K. Raja. C.K. Raja. Dr. C.K. Raja was nominated as a central government. Was nominated by central government as a first president of PCI. 1949 में
first PCI constituted was constituted, first Pharmacy Council of India was constituted in 1949. तो उसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है डॉक्टर C.K.K.E. राजा, डॉक्टर C.K.K.E. राजा, ठीक है। On the 9th March 1949, Pharmacy Council of India was constituted to fulfill the objective of Pharmacy Act, है ना। Now what are the functions of PCI? अपन ने constitution तो देख लिया है। What are the important functions of PCI? Functions of PCI. So first is to prescribe the minimum qualification to be registered pharmacist by forming a education regulation. तो registered pharmacist के लिए minimum qualification क्या होना चाहिए, है ना, वो डिसाइड किसको करना है, PCI को करना है। PCI ने किया है to prescribe the minimum qualification to be registered pharmacist by forming a education regulation. First time ये आया था। Again, to ensure uniform implementation of educational standards in the country. To ensure the uniform implementation of education standard in the country. तो ये एक फंक्शन है आपका PCI का। Then to approve the pharmacy courses or institution, to approve the pharmacy courses for different pharmacy colleges, to approve the pharmacy courses for an institute and withdrawal of approval in case if standard are not maintained, है ना। PCI का काम क्या है कि एजुकेशन, PCI का काम है कि to prescribe the minimum qualification for to be a registered pharmacist, to ensure the uniform implementation of education regulation, education standards in the country, to approve the pharmacy courses for the different institutes or withdraw of their approval in case of if standards are not maintained. Then recognition of foreign qualification. कोई अगर US में से फार्मेसी करके आया है तो इमीडिएटली उसको यहाँ पे लाइसेंस नहीं देगा, तो उसके लिए उसको एग्जाम देना पड़ेगा ना। तो PCI विल रिकॉग्नाइज हिज फॉरेन क्वालिफिकेशन। मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रजिस्टर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन ऑलरेडी। मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट, मतलब अगर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ इन अ स्टेट, दैट इज अ फर्स्ट रजिस्टर, है ना। और स्टेट से सभी चीज का रजिस्टर कंपाइल हो गए वहाँ पे PCI में एक रजिस्टर बनता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल रजिस्टर, है ना। नाउ term of members of Pharmacy Council of India is 5 years including your president. तो मेंबर्स प्रेसिडेंट जो है PCI के 5 साल के लिए रहते हैं। इफ एनी मेंबर रिमेन्स एब्सेंट फॉर 3 consecutive meetings without any intimation और वैलिड रीजन, है ना। अगर कोई मेंबर 3 कंटिन्यूसली 3 मीटिंग में एब्सेंट रहता है, इफ एनी मेंबर रिमेन्स एब्सेंट इन 3 consecutive meetings without any intimation, without any notice or without any notice or without valid reason, same will be disqualified as a member of council. अगर कोई मेंबर 3 मीटिंग में एब्सेंट होता है और वैलिड रीजन नहीं है, इंटीमेशन नहीं दिया है, तो उसका कार्यकाल खत्म कर दिया जाए। मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी ए फार्मासिस्ट इज गिवन अंडर सेक्शन 10 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948. Under section 10, minimum qualification to be a registered pharmacist is given under section 10 of Pharmacy Act. That is nothing but the degree or diploma in the pharmacy. And minimum age कितना होना चाहिए? 18 years, not less than 18 years on the date of application. इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। एजुकेशन रेगुलेशन 1991, ER 1991
फर्स्ट टाइम एजुकेशन रेगुलेशन 1991 आया था, बाद में 2007 भी आ गया, और बाद में उसमें इम्प्रूव होते रहते। एजुकेशन रेगुलेशन अंडर द सेक्शन 10 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। नाउ व्हाट इज इट प्रिस्क्राइब? एजुकेशन रेगुलेशन क्या देता है आपको? एजुकेशन रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन फॉर क्वालिफिकेशन एज अ फार्मासिस्ट। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर क्वालिफिकेशन एज अ फार्मासिस्ट, दैट इज अ क्वालिफिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। डिप्लोमा का एडमिशन लेना है तो 12th साइंस होना चाहिए, पीसीबी होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, सिलेबस, मीन ऑफ एग्जामिनेशन, मिनिमम मार्क रिक्वायर्ड फॉर पासिंग, नेचर एंड डिवीजन ऑफ सिलेबस, प्रैक्टिकल, ये सब कौन देता है? एजुकेशन रेगुलेशन अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय इंस्टीट्यूशन सीकिंग फॉर द अप्रूवल ऑफ पीसीआई। पीसीआई का अप्रूव चाहिए आपको, तो क्या क्या कंडीशन होता है? कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन which is seeking for the PCI approval of pharmacy course. Condition required by institution to be recognized for practical training, ये भी है एजुकेशन रेगुलेशन के अंदर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म फॉर फार्मासिस्ट, दैट इज ऑल्सो गिवन अंडर एजुकेशन रेगुलेशन। तो एजुकेशन रेगुलेशन के अंदर सब कुछ है, मतलब किसको फार्मासिस्ट बोलने के लिए क्या क्या, फार्मासिस्ट टू बी ए फार्मासिस्ट ही शुड मिनिमम डिप्लोमा फार्मेसी, डिग्री फार्मेसी, द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, द सिलेबस, द मीन ऑफ एग्जामिनेशन, है ना, देन द मार्किंग सिस्टम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पासिंग मार्क्स टू, कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर सीकिंग अप्रूवल ऑफ पीसीआई, कंडीशन रिक्वायर्ड बाय इंस्टीट्यूशन टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म फॉर फार्मासिस्ट, ये सब किस में दिया है? एजुकेशन रेगुलेशन के अंदर दिया है। स्टेट और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, है ना, फॉर मेंटेनिंग द अप टू डेट रजिस्टर ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट विद इन अ स्टेट। वी हैव ऑलरेडी सीन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, तो 2-3 स्टेट आके एक जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाते हैं, उनका टाइम स्पैन भी कितना होता है? 5 years। तो फर्स्ट रजिस्टर क्या होता है? फर्स्ट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज प्रिपेयर्ड इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस अंटिल स्टेट फार्मेसी काउंसिल वाज फॉर्म्ड। तो फर्स्ट रजिस्टर मतलब क्या है? फर्स्ट रजिस्टर्ड ऑफ फार्मासिस्ट, इट वाज प्रिपेयर्ड इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस बिफोर स्टेट फार्मेसी काउंसिल वाज फॉर्म्ड। देन उसके बाद में उसका सब्सिक्वेंट रजिस्टर बना during the implementation period of Pharmacy Act and framing the education regulation। इसके बाद में रेगुलर रजिस्टर बना of registered pharmacist after implementation of education regulation, and they have decided that eligibility should be diploma pharmacy plus 500 hours training। Then definition of displaced person under the Pharmacy Act। डिस्प्लेस्ड पर्सन मतलब क्या है? द पर्सन इज बीइंग डिस्प्लेस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन इन द कंट्री। जब पार्टीशन हुआ 1947 में, तो कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए, कुछ लोग इंडिया में रह गए, है ना। तो डिस्प्लेस्ड पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन इन द कंट्री ईस्ट और तो वाइल टेरिटरी ऑफ इंडिया नाउ विच इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। मतलब पहले तो इंडिया था सब कुछ, कुछ पाकिस्तान में रहते थे, वो फार्मेसी प्रैक्टिस करते थे, फार्मेसी में इन्वॉल्व थे। तो हुज प्रिंसिपल मीन, है ना, डिस्प्लेस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन इन द कंट्री फ्रॉम द erstwhile territory of India which is a part of Pakistan, whose principal mean of livelihood was a pharmacy profession or business before 4th of March 1948 and satisfies the condition for inclusion in the फर्स्ट रजिस्टर एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। मतलब है ना, 1947 के बाद में, पार्टीशन के बाद में, पहले वो फार्मेसी का बिजनेस करते थे, लेकिन अभी क्या पार्टीशन के बाद में वो पाकिस्तान में हुए, लेकिन वो इंडिया आना चाहते, है ना। तो दैट इज अ डिस्प्लेस्ड पर्सन, है ना। लेकिन 4 मार्च 1948 से पहले क्या, बाद में नहीं। रिमूवल ऑफ नेम
of pharmacist under section 36 of the act. तो एंटरिंग ऑफ द नेम मतलब क्या कि सबसे पहले आपको जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल करना पड़ेगा. यू हैव टू गो, यू हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन द स्टेट. उसके बाद में स्टेट केस में नंबर आ जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, देन यू विल बिकम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, है ना. लेकिन रिमूवल ऑफ नेम, तो आपका रिमूवल नेम कैसे करेगा रजिस्टर से. इफ नेम इज एंटर्ड बाय एरर, अगर आपका गलती से नाम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट में आ गया तो वो रिमूव करेगा. मिस रिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ फैक्ट, आपने कुछ फैक्ट सप्रेस किए या फिर गलत इंफॉर्मेशन दे दी, एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन और रॉन्ग इंफॉर्मेशन और मिस रिप्रेजेंटेशन. ओके, so if your name is entered by error or misrepresentation or suppression of fact, false information given by the patient, submitted document or false certificate, in that case also your name will be removed from the registered pharmacist. If person is convicted or person is convicted in offense in a pharmacy profession, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब आपने कुछ फार्मेसी के प्रैक्टिस करते करते कुछ कन्विक्शन हुआ है आपका एक्ट के अंदर या फिर कोई भी एक्ट के अंदर, उसके बाद में भी आपका नाम रिमूव कर सकते हैं. सो दीज आर द कंडीशन फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ फार्मासिस्ट अंडर सेक्शन 36 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948. प्रोहिबिटेड और बैन एडवर्टाइजमेंट अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट. कौन से एडवर्टाइजमेंट बैन है? तो द एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मिसकैरेज और प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन इन वुमन, करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, मेंटेनेंस और इंप्रूवमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉर सेक्सुअल प्लेजर. सच काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट आर बैन, दे आर प्रोहिबिटेड. बट इंडिया है, सब कुछ चलता है. डायग्नोसिस, क्यूर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसीज और डिसऑर्डर इन अ शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट. जो भी एक्ट के अंदर ड्रग्स का डायग्नोसिस, क्यूर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, कर सकते. प्रोहिबिशन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट which is directly or indirectly gives false impression regarding the drug or any false or misleading advertisement, they are prohibited. Now, so what are the prohibited advertisement? तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है आपको, कौन से कैटेगरीज है आपके एडवर्टाइजमेंट की जो बैन है, जो प्रोहिबिटेड है. Important definition under DNC Act. Important definition under Drug and Cosmetic Act. In addition to the adulterated drug, spurious drug, and we have already seen that. Remaining part we will see tomorrow.